नमस्कार। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के समापन समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री सम्मान्य श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार श्री अमित खरे, राष्ट्रपति जी के सचिव श्री राजेश वर्मा, सचिव उच्च शिक्षा श्री के संजय मूर्ति तथा टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और सभी गणमान्य अतिथिगण एवं विशिष्ट विभूतियों का हम सहृदय स्वागत करते हैं। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का थीम है सतत विकास के लिए शिक्षा, बेहतर भविष्य का निर्माण। इस थीम के अंतर्गत 5 सब थीम्स पर कार्य समूह बनाए गए और आज दिन भर इन समूहों में विषयों पर गंभीर मंथन किया गया। विभिन्न समूहों के चेयरपर्सन्स इन सेशंस के आउटकम्स को अब हमारे साथ साझा करेंगे। सेशन 1, Contributions to the Realization of National Education Policy 2020. May I please invite on dais the chairperson of this session, Professor M. Jagdish Kumar, Chairman, UGC. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, Shri Dharmendra Pradhan ji, Shri Sarkar ji, Shri Sanjay Murthy ji, Shri Rajesh ji. During this session on contributions to the realization of NEP 2020, we had nearly 4 hours of deliberations. Friends, higher educational institutions are basically social institutions. We need to transform them to maximize the social benefits. During our discussions, we focused on 3 important components of NEP 2020. How to make our education learning outcomes based, how to individualize and personalize the education, and how to impart education on a large scale. But before we can do any of these things, we also should ensure that the regulators who monitor the higher education need to achieve the regulatory excellence. And then we looked at the various kinds of reforms that are being implemented in different educational institutions across the country. What is unique about these reforms is that one reform positively impacts the other reform. Therefore, the overall impact is combinatorial. It is a collective effect which is transforming our higher education in our country, including such as the reforms in admission process and the emphasis that we are giving to the multidisciplinary education in our institutions by starting new programs such as the 4-year undergraduate program, by providing opportunities to the students in terms of freedom, choice and flexibility in choosing their education. We are emphasizing on the multidisciplinary education, and we are very glad from the morning's session that many of the institutions across the country are very rapidly implementing the multidisciplinary education, including the multi-entry and multi-exit scheme, providing a lot of freedom to the students. Friends, it is very important that in the university ecosystem, we need to strengthen the research efforts. We have islands of excellence, but there is a huge talent across the university system, and the recent announcement of the National Research Foundation will provide a great opportunity for the university system to strengthen the research efforts. In order to provide equity and affordability and better access to the higher education, it is important that we introduce digital technology in the higher educational institutions. We spoke about how the National Digital University or e-Vishwavidyalaya can transform the higher education in our country, and how some of the best institutions in our country can become the spokes in this e-Vishwavidyalaya and take high quality education to the doorsteps of our students. We also focused on internationalization and the Indian knowledge system. Many of the IITs are now setting up campuses outside, and we are also in the
process of announcing a new regulation which will encourage the foreign universities to set up their campuses in India, and we also concluded our discussions on how to include the Indian knowledge system in our educational processes. Overall, we found during our deliberations in our session that the educational institutions are at a rapid rate implementing the national education policy. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Professor M. Jagdish Kumar, Chairman, UGC. विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का दूसरा सेशन था अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयास और G20। इस सेशन में हुई चर्चा का निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं सेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, वाइस चांसलर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Honorable President of India, Honorable Ministers, senior officials, colleagues, ladies and gentlemen. We had a session with very good discussion on internationalization efforts. What is important is to realize that internationalization is not only to get the international students to Indian universities, but it also is very critical for our own students to enhance the quality of their own education, to broaden their horizons, to encourage critical thinking, to prepare them for playing a leading role at a global scale. And for this, the presence of international students in our campuses will help our own students, in addition to the fact that these international students will get good education from India. Just to appreciate the relevance and the importance of internationalization, a survey in recent times showed that 50% of the world's leading heads of the state or heads of the government in the world have been former foreign students at some point of time. The top 10 universities of the world, as per Times Higher Education 2022 survey, 20 to 40% international students are there in those 10 universities. Even in India, way back during the days of Takshila, Nalanda and Vikramashila, the students that came from Central Asia, from China, from Tibet, from Korea, from Japan, they played a very important role in propagating Indian culture and Indian sensibilities in their respective societies. Therefore, the importance of internationalization goes way beyond a limited scope of just bringing some students from outside. The question then is, how do we bring international students? Of course, we can offer some scholarships. We need to have a very effective outreach and communication strategy in countries of our interest. We need to also create a very conducive environment and infrastructure in our own universities, which will make the international students feel comfortable and thrive in our own ecosystems. There is tremendous potential for India to be able to attract full-time students from many countries, such as the Southeast Asia, South Asia, Central Asia, Middle East, South Central and North Africa. In addition to full-time students, we could have a reasonably strong exchange programs, undergraduate level, master's level, PhD level, wherein the students would come for a shorter duration. They might not get a degree with us, but they might spend a semester or a year with us. The important thing is that the benefits to our institutions go way beyond what appears on the surface, because when such exchange programs happen, it leads to faculty level communication, it leads to building of partnerships, it leads to research collaborations. It also helps to improve our own governance and infrastructure system. In order to host international students, create good environment for them, we will be encouraged and enabled to improve our own ecosystems, our own infrastructure. And finally, it will have a lot of benefit for India's soft power, which is what we are discussing today in the context of G20. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Professor Sudhir Kumar Jain, Vice Chancellor, BHU. And now to share the outcomes of Session 3, Research Contributions and Recognitions, may I please invite on dais the chairperson of this session, Dr. K. Radhakrishnan, former Chairman, Space Commission, Secretary, Department of Space, and Chairman, ISRO.
Honorable President of India, Honorable Ministers, distinguished secretaries, and all eminent heads of the academic institutions. It's my privilege now to brief on the outcome of the discussions that we had in the morning with about 35 experts. The topic is research contributions and recognitions. Globally and nationally, there are three overarching requirements. One, of course, is the sustainable development and the goals SDG 2030. Then we have the climate change and its impact and the natural hazards. And in India, we have the NEP 2020 that envisages a vibrant knowledge society, India to be a global superpower, and emphasizes on multidisciplinary education and research. And I should say, the Indian education system, the higher education system, is in transition. There is an emphasis today on research, innovation, and entrepreneurship. And we have amongst us champions of high-end academic research. They have done impactful research and they have contributed to the society. For example, in mobile communication, 3 institutions got together and we have the 5G standards. And we also have the 5G testbed. That shows the importance and benefits of synergy. During COVID time, there were contributions to provide the ventilator or even the medicines required. We have today a portal, a common portal to look at the public grievances, CP-GRAM. In agriculture, defense, space, energy, and basic sciences, these institutions have contributed. IITs, IISc, ISERs, NITs, central universities, and specialized institutions who are all part of this session today. Now the question is, how to push the boundaries? And why do we say this? Globally, if you take, we talk about big science and deep technology. And in the first 50, we do not have even a single institution of India. If our objectives are to be met, we need to push these boundaries. And what is required is to enhance the relevance of what we do and also the excellence in the global context. So, the recommendations are, or the need of the hour, are focus on big science and deep technology on a few themes that are nationally significant, globally prominent, and also cater to the technology security needs of the country. We are essentially importers of technology, and what we export is very minimal in technology. So from technology dependence, we need to go and move forward to technology adequacy and try to become #1 globally in a few areas. And what we require is, we need to define such large problems and decompose them into smaller problems which finally a professor and their students could handle. But what we require is a grand design and a strong drive to accomplish them on time, to the needs, to the specifications of the stakeholders. And inculcate synergy and sharing, easily said, difficult to do. Orchestrate the core competence that we have in our institutions and nurture interdisciplinary research. This is happening today in most of these places where biological sciences and engineering research is there. It is interdisciplinary. And finally, a paradigm shift is required, a mindset has to be changed. National gain, national glory, national growth is more important than everything else. That is personal gain and professional accomplishments for the self. So selfless service for the nation, that should be the motto for research in the future. Thank you very much. Thank you, Dr. K. Radhakrishnan. Ladies and gentlemen, session 4 focused on
diversity, equality, inclusivity, and wellness. And to share the outcomes, may I please invite on stage Chairperson of the session, Professor V. Kamakoti, Director, IIT Madras. Honorable President of India, Honorable Ministers, Distinguished Secretary, Higher Education, all senior officials and dear colleagues. During the session 4, it has been a very important topic today, especially in the backdrop of increasing number of dropouts in higher educational institutions, wherein these children actually feel that they are not part of the system and what are the remedies. So there was a 4-hour-long discussion in which we have freezed on a 7-pronged approach. The solutions include, first, to foster a very inclusive campus culture, wherein we value, respect, embrace, and celebrate differences, establish centers for holistic wellness, and also look at many aspects of policies which can make the campus a very inclusive one. The second aspect is to provide support services in terms of policies, rules and regulations, grievance redressals, counseling support, merit-cum-means scholarships, assistive technologies for the physically challenged, mentor-mentee relationship between students, faculty, and peers. And the third one is to increase women representation in faculty and leadership. And there was also a very significant amount of time was spent on discussing teacher diversity and also using the schemes like Prime Minister Research Fellowship to encourage more participation of students in the PhD programs, leading to increased number of faculty. It was also felt that for wellness, there must be a good student to faculty ratio. And then the fourth point was on promoting inclusive curricula, which basically includes multilingual approaches, the Indian knowledge system, vocal for local, and also implement certain regulations rigorously that have been promoted by the AICTE on 40% online courses, which will bring quality education in an access to quality education to the rural settings, and then use the portals like Swayam for bringing in quality education to all. On the fifth front, we were looking at the collaboration and partnerships, where many events that had happened in the recent times had been proved to be very useful, including the Ek Bharat, Shrestha Bharat, Yuva Sangamam, the Kashi Tamil Sangamam, and there were also suggestions to have international summer school to increase the global diversity and virtual exchange programs. The sixth point that we discussed was on engaging stakeholders, basically the parent and community participation, especially the local community, and also there were a lot of emphasis on outreach to schools in the neighborhood, and this is extremely important for us to improve our gross enrollment ratio to 50%, and that is as envisaged in the National Education Policy. We are also looking at a well-structured induction program for the students to bring in this stakeholder concept in a very detailed and systematic way. The last one, the seventh one, was on a continuous evaluation and improvement of many policies that had come up. For example, the gender equity under the Beti Bachao, Beti Padhao, the Right of Persons with Disability Act 2016, the National Digital Literacy Mission. One need to continuously evaluate the proper implementation of these policies and keep suggesting improvements so that we get the full benefit of this. It was also proposed that a document be prepared comprising all the best practices the institutions are currently following, and also some recommendations which can become a guideline for us to get a very diverse, equitable, inclusive and wellness campus across the higher educational institutions. And finally, the objective of this entire effort is Vasudhaiva Kudumbakam, where we are looking at one earth, one family and one future, which will promote equal opportunities, which will encourage critical thinking, a positive learning environment, and prepare the student for the global world, where the student will experience diverse settings in an increasingly interconnected world.
and also address social inequalities in a comprehensive manner. Thank you very much. Thank you, Professor V. Kamakoti. देवियों सज्जनों, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का 5वां सेशन इसके केंद्र बिंदु में था अमृतकाल, प्लान एंड एक्शन आइटम्स फॉर अमृतकाल. And to put before us the outcomes of this session, may I please invite on stage the chairperson of the session, Professor T.G. Sitaram, Chairman, All India Council of Technical Education. Namaskar, Honorable President of India, Her Excellency, Honorable Shiksha Mantri ji, and all the secretaries on the dais, and also off the dais, and all my colleagues from different centrally funded technical institutions. So in this session 5, more than 30 participants participated with a broad theme on education for sustainable development, building a better world. We discussed in session 5 plans and action item for Amrit Kaal. Amrit Kaal, term which signifies the perfect time to start a new venture. This is the time when bigger success can be achieved with proper efforts. It is very special for all of us. It is next 25 years, 2023 to 2047, when India completes 100 years of independence. It is the holistic approach that avoids the implementation of National Education Policy 2020 in Amrit Kaal. We have discussed, deliberated extensively what are the plans and action items in the Amrit Kaal to become the world leader in education. And in particular, we also discussed the implementation of NEP 2020, which has actually set the agenda clearly to us, what we should be doing in Amrit Kaal. India is aggressively working towards establishing itself as a leader in industrialization and technological development. We discussed many of the issues in what areas we are going to focus, whether it is semiconductors or G20 and beyond, and also logistics. Finally, we discussed how to focus on creating sustainable, equitable solutions using innovation in education as a tool to catalyze a larger societal impact, and what quality initiatives we take for making Indian students as 21st century innovators, entrepreneurs, researchers, and highly skilled professionals. So we all come to an agreement that national education policy will make India the knowledge capital of the world. And we need to focus on that and its implementation. So the vision for Amrit Kaal was to provide the best education in the world, promoting innovation, startups, entrepreneurship, research, academy, industry collaboration. And our focus was also on education in mother tongue or Indian vernacular languages, and the efforts what AICT has taken in developing textbooks are also been discussed at length. Enhance youth employability, where skilling, upskilling and reskilling was also emphasized, and a close coordination working with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was also discussed. Faculty development programs, student development programs, and also reforms in faculty recruitments, development of academic leadership were also highlighted as important steps to be taken. Internationalization of higher education and examination reforms and accreditation and regulation are the key aspects which we also discussed. So we need to create a confident, progressive, innovative, and empathic generation in the future. And we also deliberated extensively under the transformative reforms proposal to strengthen periodic assessment and accreditation of institutions as envisioned in the NEP 2020, wherein we talked about graded accreditation, that is 3-tier, graded autonomy, and One Nation, One Data platform was also highlighted, which is a very unique initiative, wherein all the institutions need to only submit the data once, where open API-driven interfaces to all other agencies will be automatically available. So compatibility with the Government of India in National Digital Framework to make the One Nation, One Data, which is an acceptable platform for everyone. Thank you. Namaskar.
थैंक यू प्रोफेसर टीजी सीताराम, चेयरमैन AICTE। और अब मैं विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के क्लोजिंग रिमार्क्स प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आमंत्रित करती हूँ। मंच पे उपस्थित परम आदरणीय भारत की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुभाष सरकार जी, राष्ट्रपति महोदया की सचिव आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी, सेक्रेटरी भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग श्री संजय मूर्ति जी, इस 2 दिवसीय अधिवेशन में उपस्थित भारत की सभी प्रमुख शिक्षा संस्थानों की वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। मित्रों, बड़े सफलता के साथ 2 दिन की इस कार्यक्रम का समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। कुछ समय उपरांत आदरणीय राष्ट्रपति जी का हमें सभी को मार्गदर्शन होगा। अभी जिस 5 विषयों पे हम लोगों ने आज सुबह गहन चर्चा किया, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने का और क्या कदम लेनी चाहिए, देश की शिक्षा को वैश्विक स्तर पे ले जाने के लिए उसके लिए क्या सोच होनी चाहिए, देश की रिसर्च जो एक मूलभूत आधार है उसके बारे में हम लोगों की सोच क्या है, शिक्षा में डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, ये सारे विषय को कैसे और समावेशी करें उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। और अमृत काल में हम लोगों की योजना क्या रहेगी उसके ऊपर चर्चा हुई। 5 प्रमुखों ने बड़े संक्षेप में लेकिन बड़े प्रभावी ढंग से अपना विषयों को रखा। निश्चित रूप में जब स्वयं राष्ट्रपति जी की नेतृत्व में ये डिलीबरेशन हुई है, मैं मानता हूँ ये 5 कोहोर्ट की जो सारे करणीय बिंदु आए हैं ये भारत सरकार की शिक्षा विभाग की नीति में परिवर्तित होगा। ये भारत की बौद्धिक समाज की शीर्ष नेतृत्वों की रिकमेंडेशन से NEP को आगे ले जाने के लिए मदद करेगी। मित्रों, फिर भी मैं कुछ विषयों को दोहराऊंगा और 2-3 विषय आपको निवेदन करूंगा। मैंने आज 5 कोहोर्ट में खुद बैठा भी था, आप लोगों की चर्चा भी सुना, कुछ 1-2 जगह पे सुझाव भी देने का आपने कहा तो उसको भी मैंने दिया। मेरे मित्र डॉक्टर सुभाष सरकार जी भी ऐसे ही काम किए, स्वयं राजेश वर्मा जी और संजय मूर्ति जी भी आपकी डिलीबरेशन को सुने। मित्रों, हमें लगता है कि अमृत काल की कल्पना बहुत बड़ी है, क्योंकि इसी क्षण में, जैसे कल मैंने कहा था, इसी दशक की एक लंबी छलांग के कारण हम दुनिया में एक उपनिवेशवाद शक्ति रूप में नहीं, एक ज्ञान की जिम्मेवारी निभाने वाले एक शक्ति के कारण दुनिया की मानवता की कल्याण करने वाले लोग हैं। इसलिए अमृत काल की परिकल्पना, उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी विकसित भारत में क्या क्या होगा और उसमें शिक्षा की क्या भूमिका होगी, उसकी और एक्सपेंशन होनी चाहिए। हमारे संस्थानों की कैपेसिटी क्या होगी, किस प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाएगा, उसके लिए मानव संबल कैसे होंगे, ये सारा विषय की विजुअलाइजेशन आखिर ग्रासरूट में तो करना ही पड़ेगा, वो आपकी कैंपस में करना पड़ेगा। आपके नीचे जो राज्यों की यूनिवर्सिटी है, आपकी सहयोगी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, AICTE कॉलेज हैं, ये सारे विषयों तक इस डिबेट को ले जाने की आवश्यकता है। मित्रों, इसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की में चलने वाले सरकार की एक प्राथमिकता का विषय है। कैपेसिटी संस्थानों की बढ़नी चाहिए, कैपेसिटी शिक्षकों की बढ़नी चाहिए, जो जिसके आप मार्गदर्शक हो, जिसकी आप खुद नेतृत्व करते हो,
और इसीलिए मैंने आज फिर एक बात को दोहरा रहा हूँ, 162 इंस्टीट्यूशंस की फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देश की 4 करोड़ उच्च शिक्षा में जुड़े हुए स्टूडेंट्स को ही इंस्पायर करेगा। और उन्हीं के कंधे पे जो आज 15, 20, 25 साल की नौजवान जो आपके जिम्मे में है, ये आने वाले 25 साल में विश्व को नेतृत्व करने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों की एक प्रमुख काम होनी चाहिए। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये कहा है, मैं उसको भी दोहराना चाहूँगा, हमारी सभ्यता की ज्ञान प्रवाह की वैज्ञानिक प्रमाण वेद काल से हमें मिलती है। 10,000 साल पुरानी ये परंपरा है। इस 10,000 साल पुरानी परंपरा की नींव पे जब हम बैठ के दुनिया को देखते हैं, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित हमारी मौलिक विचार, हमारी उद्देश्य क्या है, मैकॉले पद्धति तो हमको पराधीन करने के लिए बनाई गई थी, हमारे आर्थिक संसाधनों को लूटने के लिए किया गया था। उस मॉडल से हम बाहर आज आ रहे हैं, डीकोलोनाइज खुद को हम कर रहे हैं। तो हमें अपना जब नई पहचान 21वीं सदी में बना रहे हैं, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ही आधार होनी चाहिए, लेकिन वैश्विक दृष्टि हमारी होनी चाहिए। यह हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। मित्रों, ये सब करते हुए कुछ शिक्षा विभाग ने, विशेषज्ञों ने, आप ही लोगों की मार्गदर्शन में कुछ प्रायोरिटाइज किया गया, जिसके बारे में आज मैं देखा कई विषयों में आपकी फ्यूचर रोड मैप में चर्चा हुई। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अनिवार्य है। 162 संस्थाओं में इसी साल 1-2 चर्चा में मैंने सुना कर सकते हैं, शायद ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, करना ही होगा, तब जाके देश में हम एक नई मानव संबल खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि हमारी कामकाजी लोगों को, हमारी समाज की जो नीचे तबके में रहने वाले लोगों को अपने काम के साथ, सम्मान के साथ पढ़ाई का मान्यता देने की एक इंस्ट्रूमेंट ये क्रेडिट फ्रेमवर्क है। ये आपकी प्रायोरिटी की विषय होनी ही चाहिए। मित्रों, कई संस्था आप में वो नहीं है, लेकिन आपकी दायित्व बनते। किसी ने आज एक अच्छा सुझाव दिया, हम 162 हैं, देश में 50,000 कॉलेज है, देश में 1100 यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स की इंस्टीट्यूशन है। आप 10-10 यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी लेंगे तो देश की सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एपेक्स बॉडी आपकी दायित्व के साथ जुड़ जाएगी। एक्रीडेशन, असेसमेंट और रैंकिंग, इसकी भी कोई विकल्प नहीं है, इसमें से हमें जाना ही पड़ेगा, ये आपकी दायित्व ही बनती है। मित्रों, आज के दिनों में बिना टेक्नोलॉजी के हम एक बहुत बड़ी छलांग नहीं लगा सकते हैं। मैं ये धृष्टता बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपसे कुछ समझाऊं, लेकिन मैं आग्रह करूँगा, आपको निवेदन करूँगा, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को हमें एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े। ये मैं विश्व के नेतृत्व से मिलता हूँ। G20 के दौरान एक राउंड और भी मिलना हुआ। मित्रों, आप भरोसा रखिए, पूरा आप ही की योजना को, आपकी पद्धति को, आपकी प्रणाली को और आपकी टेक्नोलॉजी लीपफ्रॉगिंग को दुनिया अपेक्षा कर रही है। आपकी मॉडल आने वाले दिनों में ग्लोबल बेंचमार्क बनेगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड बनेगा। आपकी NRF आने वाले दिनों में ग्लोबल साउथ के लिए बेंचमार्क होगा, इसलिए आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मित्रों, कैबिनेट ने कुछ दिन पहले NRF को स्वीकृति दी है। इसी वर्षाकालीन सत्र में मैंने कल भी उल्लेख किया था, ये कानून में परिवर्तित हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन की नई रूप ले लेगी। रिसर्च कैसे होनी चाहिए? रिसर्च हमारी आज की आवश्यकता, एक कोई साइटेशन करने के लिए नहीं, एक जर्नल में अच्छा छप जाए, हमारे इंडिविजुअल अचीवमेंट हो जाए। आप ही में से किसी ने सुझाव दिया, हमारे इकोसिस्टम में 15,000 असिस्टेंट से प्रोफेसर तक, एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर की कम्युनिटी है। अगर ये लोग अपने परिसर की सामाजिक आवश्यकता को, वैज्ञानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करेंगे, शायद हमारे देश में कोई समस्या ही नहीं रहेगा। आपने कोरोना में किया, एक एक इंस्टीट्यूशन को मैं अभी जब आंख आपसे डालता हूं, आपने मेरे को दिखाया, नहीं तो आपके बारे में मैंने पढ़ा, नहीं तो किसी ने बताया, आप ही ने तो समाधान निकाला। उस समय में कई चीज हमारे पास में नहीं थी, लेकिन आपने निकाला। आज हमें वैश्विक जिम्मेवारी लेना है,
तो हमारी रिसर्च ग्लोबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ये आपकी दायित्व बनती है। आज हम परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के सामने इस विषय को संकल्प करें। हैदराबाद में एक कलेक्टिव रिसर्च मॉडल ग्लू ग्रांट आधारित IIT हैदराबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद दोनों की कोलैबोरेशन में भारत सरकार की अनेक संस्थाओं को मिला के ये प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की मॉडल भारत सरकार आने वाले दिनों में और करने वाला है। मित्रों, मैं अंत में एक ही बात निवेदन करना चाहूँगा, संगठन में शक्ति है, सामूहिक निर्णय में शक्ति है। आज जो परंपरा हमारे देश में रही है, आदरणीय राष्ट्रपति जी की स्वयं की उपस्थिति में हमारे देश में परंपरा रही है कि देश की शिक्षाविदों को बुला के उनसे सुने और उनको 2-4 शब्द सुझाव दे। आज जो घड़ी हम लोगों के लिए पहुंची है, कल एक अनोखा प्रयोग आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया। NEP के रिकमेंडेशन पे जो एक परंपरा भी बनाए जाने का योजना बनी है कि देश की फिलांथ्रोपिस्ट को भी बुला के राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करना। आप जितना महत्वपूर्ण हो, उनकी योगदान भी उतनी महत्वपूर्ण है। ये पद्म से कोई कम पुरस्कार, कोई कम सम्मान राष्ट्रपति जी ने, ये कन्वेंशन कहीं विज्ञान भवन में भी हो सकता है, ये कन्वेंशन कोई एक बड़े होटल में भी हो सकता है, लेकिन ये परंपरा रही है आप समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग हो, आपको राष्ट्रपति जी खुद बुलाएं। ये सारे प्रायोरिटी को आप ही लोगों की चर्चा से ये सामने आई है, इसको हम जिम्मेवारी के साथ निभाएं। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबको फिर शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। साथ विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के समापन संबोधन के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, राष्ट्रपति के सचिव श्री राजेश वर्मा जी, उच्च शिक्षा सचिव श्री के संजय मूर्ति जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी कुलपतिगण, अन्य केंद्रीय संस्थानों के सभी निर्देशक, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, इस राष्ट्रीय महत्व के कॉन्फ्रेंस के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर मैं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा उनकी पूरी टीम को तथा सभी प्रतिभागी भागियों को बधाई देती हूँ। इस कॉन्फ्रेंस की थीम और सभी 5 सब थीम्स हमारे देश और पूरे विश्व समुदाय के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विषय वस्तुओं के चयन के लिए इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों की मैं सराहना करती हूँ। सब थीम्स पर सभी समूहों के चेयरपर्सन्स द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार सारगर्भिक है तथा उन्हें कार्यरत देने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पॉलिसी को प्रैक्टिस में लाने में ही पॉलिसी की सार्थकता सिद्ध होती है। आउटकम्स और रिजल्ट से ये सिद्ध होता है कि पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को व्यापक स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्यरूप दिया गया है। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए भारतीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रम के परिणाम बहुत प्रभावशाली रही है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंक्लूजन की चर्चा पूरी विश्व में की जा रही है। आज पूरी विश्व में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% भारत में होता है। सरकार की प्रभावी पहल तथा जनता की भागीदारी से ये क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत कम समय में ही संभवकार दिखाया गया है। इस समावेशी परिवर्तन से
छोटे से छोटे स्तर पर ट्रांजैक्शंस करने वाले फल और सब्जी विक्रेता और ग्राहक, ऑटो टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालक आदि सभी शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि इसी तरह की परिवर्तनकारी तथा समावेशी परिणाम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे प्रामाणिक उपलब्धियों की सराहना भी विश्व स्तर पर की जा रही है। नॉलेज सुपर पावर के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट्स एंड G20 विषय पर आज की गई चर्चा बहुत ही प्रासंगिक है। इस वर्ष भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। G20 के देशों की विश्व के कुल GDP में 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% और विश्व की जनसंख्या में 2/3 हिस्सा है। इसीलिए यदि भारत की G20 देशों की शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी स्थिति बनती है तो हमारा देश नॉलेज सुपर पावर बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। Ladies and gentlemen, I am happy to note that research contributions and cognitions was one of the 5 sub-themes taken up today. Innovation and cutting-edge R&D are among prime movers of economic and social development of the nation. National Education Policy 2020 puts special emphasis on creativity and innovation. Promoting outstanding research is one of the basic principles of this policy. Leading universities and technology institutions in the world have focused on innovation. They provide an ecosystem that supports research and development which can be applied in industrial and commercial spheres. Higher education institutions in our country have the potential of becoming powerhouses of research and innovations. There are several surveys which provide ranking of higher education institutions in terms of revenue generation through patents and innovations. I am glad to observe that higher education institutions in India are making the transition towards promoting startups, applied research and economically valuable innovation while preserving the tradition of fundamental research. I am sure that in your institutions, all of you will promote a research and innovation-oriented ecosystem. Such research and innovation may be used for industrial and commercial purposes. I would like to suggest that some methods may be developed to recognize and reward those institutions of higher education which create valuable intellectual property and generate revenue through such patents and innovations. देवी और स्वजनों, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी एंड वेलनेस पर विशेष सत्र आयोजन करने की मैं सराहना करती हूँ। संवेदनशीलता के ये सभी आयाम उच्च शिक्षा को समग्रता प्रदान करेंगे। Institutions of higher education are among the most effective platforms for promoting our constitutional ideals of justice, equality, fraternity, individual dignity, and respect for women. आधुनिक युग में विकसित और शक्तिशाली देश अपने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी जाने जाते हैं। उन देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी देशों के विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा रोड मैप दिया गया है जिस पर चलकर हमारे उच्च शिक्षण संस्थान भी ग्लोबल एजुकेशन सेंटर्स बन सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए
तय की गई सभी सब थीम्स अमृतकाल के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा देश के विकास में योगदान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि अमृतकाल के दौरान भारत को हर आयाम पर विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में देशवासियों को आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय विकास की इस यात्रा को हमारे उच्च शिक्षण संस्थान तेज गति प्रदान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके कुशल नेतृत्व में हमारे उच्च शिक्षण संस्थान भारतीय भावभूमि पर आधारित विश्वस्तरीय ज्ञान के सृजन का केंद्र बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं और अपने वाणी को विराम करती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार आदरणीय राष्ट्रपति जी। समापन समारोह के अंत में सभी गणमान्य अतिथिगण का धन्यवाद देने के लिए मैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार से अनुरोध करती हूं कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। Respected Honorable President of India, Honorable Shiksha Mantri Sri Dharmendra Pradhan Ji, Secretary to Honorable President Rajesh Verma Ji, Advisor to Honorable Prime Minister, Secretary of Higher Education, Government of India, Directors, Vice Chancellors of all IITs, triple IITs, NITs, IISERs, Central Universities, NIPERs, NID, and officials of the Honorable President Secretariat, Ministry, UGC, and AICT, and all other officials present here. I would like to take this opportunity to thank Honorable President for being gracious enough to invite us to the visitors conference and give us all an opportunity to meet in person. I would also like to express my gratitude and thanks to Honorable Shiksha Mantri Sri Dharmendra Pradhan Ji for guiding us all through the process of organizing this conference. I would thank all the chairpersons, speakers, and moderators of the 5 parallel sessions for those wonderful and elaborate presentations on various themes. The first session was on the sub-theme of contribution to the realization of NEP 2020. The first session has been concluded by Professor M. Jagdish Kumar, and presentation and moderation were done by Professor Abhay Karandikar, Professor T.V. Kattamani, and Professor Shantrisri Dhulipudi Pandit Ji. Where you have discussed on regulatory excellence, reforms in higher education institutions, reform in admission process, Indian knowledge systems. I express my sincere thanks to all of them. The session 2 was on the sub-theme of internationalization efforts and G20, where the 2 presentations were given by Professor Rangan Banerjee and Professor K. Uma Maheshwar Rao. The observation and moderation was done by Professor Pramod K. Jain, and the session was concluded by Professor Sudhir Jain, where they have discussed very nicely how important, and you have discussed to attain international students, how international students should be attained, and what are the challenges and what are the opportunities. You have nicely discussed. My sincere thanks to all academicians
related to session 2. In the third session, which was on research contribution and recognitions, have been discussed. This third session was concluded by eminent Indian space scientist Sri K. Radhakrishnan. The presentation and moderation were done by Professor Govinda Rangarajan, Professor Bashutkar J. Rao, and Professor Najma Akhtar, where you have discussed Sustainable Development Goal 2030, and you have also discussed all required sectors. I thank them for their deliberations. The sub-theme of the fourth session is very relevant for harmonization in society, which was diversity, equality, inclusivity, and wellness. In this session, presentation has been given by Professor Shantanu Bhattacharya and Professor Prasad Krishna, and observation and moderation were done by Professor Prabhashankar Shukla, and Professor V. Kamakuti concluded the session. The eye-opener, the solution, spatially fostering, including campus culture, and all sectors were discussed and very nicely. I again express my special thanks to all academicians who have devoted for the Honorable Prime Minister's vision of Sabka Saath, Sabka Bikash, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. The fifth session was on the aspiration and the time-bound target for the country, and that is plans and action items for Amrit Kal. The session was concluded by Sri T.G. Sitharaman. The presentation were given by Professor Rajat Muna and Professor Yogesh Singh. The observation and moderation was done by Professor Rajiv Ahuja. They have very brilliantly highlighted the role of higher education during Amrit Kal and the way forward to the new glory. I express my warm thanks to all academicians and administrators related to Session 5. These brainstorming sessions were very fruitful and brought out some very interesting ideas, leaving with us some good thoughts and action plans. There were some really interesting ideas discussed in the 2 days conference. The topic of plan and action items of Amrit Kal was the one that also really interested to everyone. As you all know, that our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji launched Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate a progressive, independent India, culturally rich heritage and achievements of India, which is also an ode to the freedom fighters who contributed to the freedom struggle. I am also delighted that Visitors Conference has brought an opportunity for the institutions to review the steps taken by all stakeholders in meeting the objectives of National Education Policy 2020. I am pleased to see the vigor and spirit with which all the institutions are introducing new and innovative ideas and policies. This has also reflected on the recent QS ranking 2024, wherein our 45 institutions have featured in 2024 as compared to 41 in last year. I would also like to thank all the officials of the Honorable President's Secretariat as well as the Ministry for making this conference a huge success. I once again my sincere gratitude to our Honorable President Madam for her vision and for sparing valuable time for the conference. I would also like to thank Honorable Shiksha Mantri Sri Dharmendra Pradhan ji for his continuous support and endeavor to pave the path for the greater outcome of this conference. I have full faith and confidence that all dignitaries, academicians and participants will continue to work hard and will establish their institutions as benchmark
for others to follow to make India the knowledge superpower that is Vishwaguru. Thank you all. Bharat Mata ki Jai. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब सबसे अनुरोध करती हूँ कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण को मंच पर आमंत्रित करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी के साथ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए कृपया मंच पर पधारें।